हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग जैसे कि नाम नॉर्मली आपको दिख रहा होगा, हम लोग LIC एडीओ के इंटरव्यू के लिए बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिपीटेड मिस्टेक्स। यानी कि जो हम लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं, अगर वो इंटरव्यू में जाते हैं तो फेस करते हैं, और वो ना चाहते हुए भी वो भी गलती दोहरा के चले आते हैं जो वो नहीं करना चाहते थे। तो आज हम लेके चलेंगे आपसे मोहंती सर। देन उसके बाद हमारे साथ खुराना सर हैं, खुराना सर से बात करेंगे। मोहंती सर। Good evening, sir, and good evening, students. I would like to congratulate you first for having cleared this rigorous test, and you are now going to appear the interview. And we have a very long experience of conducting interviews with various type of students, and some of the commonly observed mistakes which we notice during the course of the interview, which could have been avoided because of the casualness or some kind of lack of awareness or some gap at some level. People commit these common mistakes, as a result of which their performance level is adversely affected. Since LIC ADO is a very important post, it is an officer's post with a lot of lucrative benefits, and it is one of the in the competitive scenario, it is rated to be one of the best jobs one can lay his hands on. And in this scenario, you are expected that when you are going to the interview after clearing all these tests, where you have already proved your potentials, your command over your theoretical knowledge and everything. So these 15 or 10, 15, 20 minutes which you are going to face in the interview before the interview board is going to be very vital or decisive for your selection. And what common mistakes we observe generally, which you should avoid, and we find that this is a very repetitively people commit it because of some kind of inhibition, some kind of nervousness or whatever it is. Some of the few of the points I would like to highlight, and I would request also Mr. Kurana to highlight the rest of the areas which I have left out. Friends, that before you appear when you are going to the interview board, there are basically two aspects. As you know, that communication is always very important in an interview. Yeah, but communication has got two different dimensions. One is your verbal communication, and the other is your non-verbal communication. So the initial part of your interview, when you are being called for the interview, board आपको members बुला रहे हैं and आपको interview room के अंदर enter करना है, उस time that is the first impression also, and the non-verbal communication starts. Your non-verbal, the way you express through your body language, your gestures, your other things, that also matters, and that is a part of the interview decorum which you are supposed to maintain. I have seen many of the students, while either in a hurry or due to some kind of nervousness, they suddenly open the door and dash into the interview room, which is not which is not as per the decorum. And you are supposed to, before entering the interview room, when you are getting a call for the interview, you are supposed to take the prior permission. For that, you have to keep the door slightly open and seek permission from the board with your to enter. May I come in, sir or madam, sirs? Okay. And once you get the permission, then only you enter. And after entering also, you sometimes you people come and straight away they take the seat. So that is also not in terms of the A. You are supposed to seek the permission of the chairman and the board members to take your seat. Okay. And you have to also, they also fail to wish the members, that is good evening, good morning, good afternoon, depending on the timing for which you are being called. So you are supposed to greet the board members also with basically your eye contact on the chairman and also other members whoever are present. You must look at them. It's not like that. So the element of confidence, the element of it should be reflected in your body, and you must that should be thoroughly reflected in your eye contact also with them. So without wishing also, people sometimes they take their seat. That is also a floutation of the that is not considered in the right spirit. Okay. So whenever you are entering the board also, room,
That is the first impression, and people say that the first impression lasts long, and it is very difficult to reverse the first impression. First impression ko even the researchers show that the whatever impression is formed initially, that is very, it takes a lot of time to change it. So that you have to be very extra careful at that level. So that yeah, and you must be very smiling because you are going for a in a service sector. You are basically going to join a service sector organization like LIC. So you are expected to be smiling, pleasing in your personality, and you should have a confident look when you enter. Okay, and you wish the board, and whenever you are given a, you seek permission, may I sit down, sir? May I take my seat? And whenever you are permitted to take your seat, you take your seat, and then the interview process starts. When the interview process starts normally, so sometimes because that is the initial part, I find that some people they get nervous and something like that. They either fumble, look here and there. It should not be like, you should be very cool, composed, and look at the board members, particularly with the focus on the chairman who is going to ask you the question. So that eye contact must be maintained there. Sir, normally the question, initial question you can always predict, which is normally asked, that आप आपके बारे में कुछ बताइए, speak something about you or you introduce yourself, whatever it is. Introduction part is very important, and in some form or the other, they are going to pose this question to you. Either directly, if they have got the biodata, they might ask you something about your education, your background. Otherwise, also, if you are asked to introduce yourself, which is a very normal question, I have seen people, they give a very haphazard answer. It is not organized, systematic. It is unduly long. They talk too much about their siblings instead of themselves, because you see, this is an assessment about you, and Yeah. you must know, and you must know how to present yourself to the interview board. So there, if you are expected that you give a very brief introduction about you, your name, the place to which you belong, the type of family to which you belong. You need not have to elaborate on this. Either you belong to a middle class family or a farmer's family, and your father is such and such. Nothing much about that. Then you give a broad indication of your academic background with the latest academic qualification you have. Okay, along with the year from which university you have passed, everything. Sometimes the interviewer has to pose some counter questions to find out जो कौन सा साल में आप पास किया, कहाँ से पढ़ा, ये सब नहीं होना चाहिए. That you should present not in piecemeal but at a time. Okay. And if you are already working in any other organization, अगर आप already कहाँ काम कर रहे हो and you are coming to LIC, then you must mention where you are working and the type of assignment which has been entrusted to you. क्या परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन आपको बताना है. Or if you have got any type of extracurricular activities during your academic year, which you find may be relevant for the job profile you are going, that you may mention. Either you have got some kind of awards or some kind of recognition, that you may mention. Otherwise, unnecessary, we need not have to elaborate much about your siblings and others. And it should be a very clear, precise, focused, organized answer. Sometimes I find that people, they are coming for a particular organization, they're not aware about that organization के बारे में पढ़ के नहीं आते. Suppose you are going for LIC, you do not know anything about LIC का performance क्या है, LIC की क्या कब nationalized हुआ था, in which year it came into ये, क्या क्या LIC का ये है, LIC का कितना आपका asset size क्या है, LIC कितना revenue they have generated, LIC का IPO इशू हुआ था उसके बारे में, समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, LIC का चेयरमैन, LIC का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, LIC का बिजनेस प्रोफाइल, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए. बिकॉज समटाइम्स आई फाइंड इफ यू फेल टू आंसर certain basic things about the organization, and even particularly the USPs, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आपको पूछा जाता है क्यों आप LIC में आना चाहते हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप नहीं बताओगे, तो दैट डजंट गिव ए वेरी गुड इंप्रेशन. यू ओके मस्ट बी सर. वेरी थॉरो.
सर हम खुराना सर से जानना चाहेंगे सर, अगर जैसे सर ने बताया कि अगर हम लोग जाते हैं तो परमिशन, प्रायर परमिशन लेना होता है एंट्री लेते ही। बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स के सर मैसेज आ रहा था कि सर क्या मेरे को गेट नॉक करके जाना पड़ेगा, गेट नॉक करके एंट्री लेना है या फिर गेट ओपन करके मैं कम इन पूछना होगा सर, खुराना सर। नहीं, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जी। विद इन 15 मिनट्स जो भी कैंडिडेट है, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज ए वर्थ कैंडिडेट एंड ही इज गोइंग टू बी एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर। तो उसको अपने आंसर्स में और अपनी बॉडी लैंग्वेज में दोनों बड़े बिल्कुल प्रिसाइज वे में काम करना है, इसलिए नॉक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड। He has to just open the door, and while opening the door slowly, he यस सर। has to say, "May I come in, sir?" बस इतना ही करना है। ओके And सर। by that time, the answer will be given, "Okay, come in." और फिर जैसे मोहंती सर ने कहा है, he has to greet the chairman first and the other panel members, और नॉक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे सर ने बताया, इंट्रोडक्शन का है। तो इंट्रोडक्शन बड़ी प्रिसाइज होगी, पेरेंट्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हॉबीज भी नॉर्मली अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें आपका स्पेशल इंटरेस्ट क्या रहा, उस पर आप फोकस करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनवेरिएबली आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा। और अगर आप इंजीनियर हैं या अगर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, तो आपसे सीधा पूछा जाएगा, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एन इंश्योरेंस कंपनी विच इज ए फाइनेंशियल इंडस्ट्री सर्विस ओरिएंटेड। तो इसके लिए आपको बड़ा अच्छा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि दिस इंडस्ट्री हैज लॉट ऑफ स्कोप, दिस हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, या आई एम इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। और अगर आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कहेंगे कि भाई ये मेरी बैकग्राउंड है और ये मेरे लिए आगे मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेरे काम आएगी बिजनेस में। सो दिस इज द स्टेप, वन बाय वन यू हैव टू टेक। ऑल द क्वेश्चंस एक्चुअली विल emerge आउट ऑफ योर आंसर्स। अगर आपने कोई एक्सट्रीम आंसर दे दिया, तो फिर आपको क्वेश्चन उस पर पूछा जाएगा विच यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो डोंट ट्राई टू रश इनटू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको 3 चीजें जरूर प्रूव करनी है। एक, आपकी कस्टमर ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस क्या है, एग्जैक्टली सर। आप प्रीमियम ले रहे हो, उसको इंश्योरेंस दे रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी दे रहे हो और एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी दे रहे हो, और वो पैसा जो है आपने उसको वापस करना है एज पर दी टर्म्स। तो आपको कस्टमर ओरिएंटेशन होना पड़ेगा, आपको सर्विस प्रोवाइडर होना होगा, आपको गुड एनालिटिकल अप्रोच चाहिए, आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, और एक आपको ऑल अलोंग इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी प्रूव करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो। तो जस्ट लाइक इन बैंकिंग, here also honesty and integrity is of utmost importance. सर एक क्वेश्चन और था, ये एक्चुअली हम इंटरव्यू क्लास ले रहे थे, बच्चों को बहुत डाउट था, इनफैक्ट हम लोग ने डिस्कस भी किया था। आप दोनों पैनल से हम बात करना चाहेंगे इस मैटर पे कि सर अभी बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो क्या यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ पर कवच का कोई बड़ा रोल था? एक, अगर हम कवच की नहीं बात करते सर, तो ये पूछा जा सकता है कि या किसी की फॉल्ट की वजह से, किसी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ? आपको ओपिनियन क्या है यहाँ पर? क्या कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा कंट्रोवर्सी रहा हो सर, तो उस देखो, जवाब। ऐसा है, हाँ जहां पे भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और जी सर। पर्टिकुलरली जहां पे अभी चीजें इन्वेस्टिगेशन में हैं, हाँ सर। उस केस में आपको बड़ा बैलेंस्ड आंसर देना पड़ेगा। एक तो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम आंसर नहीं देना, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको नॉलेज के हिसाब से देना है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो डोंट ट्राई टू गेस। एक करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, ये एग्जैक्टली बहुत ऑब्वियस बात है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे हिसाब से आंसर यही होगा कि देयर सीम्स टू बी एन अपरेंट टेक्निकल एरर समवेयर, to the extent possible at this point of time the full information is not there for which investigation is going on. The reality will come to be knowledge of the public after the investigation is complete, but at this point of time there seems to be some error which needs to be rectified. Point इतना जान से आवाज दीजिए, इससे ज्यादा नहीं दीजिए unless specifically asked. ओके सर। देखिए खुराना साहब ठीक बोले हैं। एक्चुअली when the subject is under investigation now, the matter has been handed over to CBI. Okay, even they are apprehending some kind of criminal angle maybe.
but that is not established now. Okay. So in that case, it is very difficult, but it is not desirable that the candidate should give an extreme view without knowing the actually. They should say that the matter has been handed over to this thing, to CBI now, because they are also apprehending some kind of criminal angle in this year. But there are different conflicting views on this, and the matter final truth will emerge only after the investigation process is over. ओके सर। So सर एक that चीज kind और, of thing. हाँ, अगर हम बात करें LIC एडीओ, तो सर क्या ये तो ये तो आप जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि सर कि LIC एडीओ की उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये हो सकता है सर, अगर मान लीजिए कैंडिडेट अगर जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा आइडिया ना हो तो उसके लिए क्या मतलब कि या उसे उसके लिए कवर करके जाना होगा उनको, या फिर कि सर कोई इशू नहीं कि आप बोल देंगे सर इतना इतना पता है, दैट्स ऑल। नहीं, देखिए बड़ी क्लियर बात है कि जॉब प्रोफाइल तो उसको पढ़ के जाना चाहिए। अगर आपने प्रूव करना है कि यू आर फिट फॉर दिस जॉब, सो अनलेस यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, हाउ विल यू प्रूव योर वर्थ? तो इसके लिए आपको जॉब प्रोफाइल पढ़ के जाना है, और सिर्फ प्रोफाइल पढ़ के ही नहीं जाना, आपको इंडिकेट करना है कि आप वो सारी चीजें कंप्लाई भी कर रहे हो या उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो। तो इसलिए आपको कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कंप्लेंट्स को हैंडल करना, पब्लिक को हैंडल करना, अपनी टीम को हैंडल करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और ओवर एंड अबव, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है, तो मार्केटिंग स्किल तो चाहिए ही चाहिए। मार्केटिंग स्किल, हाउ टू सेल नॉट ओनली द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन ए पॉजिटिव मैनर, ताकि और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हों। तो इस केस में बड़े क्लियर रोल के साथ जाना पड़ेगा कि माई रोल विल बी टू develop the business of the organization, which is basically selling the life insurance, and that I will be doing in a team spirit with the help of my agents also, who will also be given due training and motivation. So training and motivation, both the things are there. Training is to give the skills and motivation is to give the aptitude for development of the business. Both the things are requirement. ओके सर एक चीज और, जैसे कि नॉर्मली हम लोग सभी इंटरव्यू में बात करते हैं, और मोहंती सर भी थे, सर आप भी थे, तो हम नॉर्मली इसके पहले बात करें IBPS PO के इंटरव्यू में, तो सर वहां पे हम लोगों ने बात किया था कि हमें अननेसेसरी जवाब नहीं देना होता किसी चीज का। तो सर यहाँ पर भी अगर सपोज दैट कि कोई ऐसा इंश्योरेंस के टर्म या फिर कोई ऐसे मार्केटिंग के टर्म या फिर कुछ ऐसा पूछा जाए जो एक्चुअल पता होना चाहिए बट उस कैंडिडेट को ना पता है, तो वहां पर नहीं पता है, तो वहां पर सॉरी बोलना बेटर होगा, आई थिंक, जहां तक हमें लग रहा है। Yes, in the response to this question, I must say that you must be intellectually honest. Exactly, sir. Because honesty, and as Khurana Sahib has already rightly said, honesty and integrity is one of the basic attributes of any service sector or any kind of organization, and particularly in a service sector like LIC and like. So if you do not know anything, which is a factual thing, and you have not been able to recollect, or you do not have any conceptual understanding of that thing, it is better not to hazard any kind of wild guess in this case. It is better to confess politely, sir, I failed to recollect, or I have not read somewhere here, and I would definitely like to brush up my knowledge after I go from this year. And I should have known, but I do not know at this moment. It is better to confess, and in a polite manner, than bluffing. Because any type of wild guess or bluffing you resort to, that is always considered to be a very negative sort of in your performance. That is always considered very adverse. And don't. डेवलपमेंट ऑफिसर का जो काम है वो मार्केटिंग का है, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट का काम है, पर उसने शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि शो ऑफ अगर करेगा और वो उसको फिर अपनी वर्थ प्रूव नहीं करेगा, तो देन ही विल लूज हिज क्रेडिबिलिटी, एंड वंस ही लूजेस हिज क्रेडिबिलिटी, द बिजनेस विल नॉट कम टू हिम। ये चीज बड़ी ध्यान में रखनी है। और आज की डेट में LIC इज नॉट अलोन, देयर आर 10 मोर कंपनीज इन द प्राइवेट LIC बिजनेस, तो कंपटीशन बहुत है। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बाद में स्टार्ट हुई हैं, उनकी कुछ अपनी एडवांटेजेस हैं। तो इसलिए LIC को और आगे डेवलप करने के लिए दिस मैन विल हैव टू हैव अटमोस्ट इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट, तो वो उसको हर स्टेज पे दिखानी है, और अननेसेसरीली शो ऑफ करना जरूरी नहीं है। मिस सेलिंग नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट को पीपल आल्सो मिस सेल, सो दैट इज अ वेरी सीरियस क्राइम, दे शुड अवॉइड मिस सेलिंग। ये सर एक चीज और, हाँ सर प्लीज प्लीज। That is why honesty and integrity is very important in LIC and banking.
all the sectors. ओके सर, एक चीज और, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे पास क्वेरी आ चुके हैं, तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोग से बेटर कोई बता नहीं पाएगा यहाँ पे। सर एक चीज और, कि अगर कोई कैंडिडेट है, कि एक कैंडिडेट थी, वो बोली कि सर मेरा बीएड परसुइंग है, वो बीएड कर रही हैं, तो क्या उनको ये दिखाना पड़ेगा, या फिर कुछ कैंडिडेट हैं जो एमकॉम कर रहे हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, या कुछ लोग जिनका बीटेक या एमटेक चल रहा है, तो क्या उनको बताना चाहिए, अपने डिटेल उनको देना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हो, या फिर आपका जो गैप है बीच में, या उसको बायोडाटा जो मेंशन करना उनको, तो क्या सर उनको शो करना चाहिए अपने बायोडाटा में? देखिए, people have very undue apprehensions about if there is a considerable gap. जब भी वो पास किए हैं और जब इंटरव्यू दे रहे हैं और हम्म। फाइनल ये है, जब गैप होता है, तो पीपल हैव लॉट मेनी फिक्टिशियस फियर्स। ऐसे कुछ नहीं है। इफ दे आर ऑलरेडी परसुइंग सम हायर स्टडी, देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आर श्रिंकिंग, एंड कोरोना के इन द पोस्ट कोरोना फेज आल्सो even the opportunities have shrunk like anything. There is a reduction in opportunities. So in this scenario, so if there is a little bit of delay and you are only focusing on some of the exams and you have not been able to clear up here, it is better to confess, but you should have some kind of justification that you are not only focusing on only LIC. Suppose you have also simultaneously appeared different type of bank exams. You have not somewhere you have qualified, somewhere you have not been able, or the time at your disposal you are productively utilizing. Either you are helping your father in some way, or you are doing some kind of tuition. You are getting some. You are supporting yourself financially, also supporting, getting some kind of financial help for yourself. So that kind of thing should be there. And I think if you are pursuing any kind of higher studies, that is not in my opinion, there is nothing bad about it, because naturally you have to you have to explore extra avenues at your disposal, opportunities. So you can always you are free to do it. I don't think this is a demerit, in my opinion. ओके सर। But it should be the way you have to present yourself. So that should convince the interview board that you have definitely worked on different type of options available before you, and you have productively utilized your time without having any kind of wasting your time in different type of things, or you are going in a very wild and haphazard way. You are not focused on your this thing. That impression should not go to the interview board. This is my opinion. Quran जैसे sir would मोहन like सर to. ने कहा, बेसिकली व्हाट ही इज एम्फसाइजिंग इज कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है. whatever you are, you have to prove that you are most suitable candidate for this post. इसलिए कोई नेगेटिविटी या कोई अननेसेसरी एप्रीहेंशंस के साथ मत जाओ. गैप है तो वो भी जस्टिफाइड हो सकता है. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई तो आपकी सारी उम्र काम आएगी. whatever you are studying will be of some usage somewhere or the other in your life. This is not the end of the life. This is in fact the beginning. In fact, throughout your career also you will have to learn. There will be fresh training given to you. You will be learning new things. You will be learning new concepts. And आपको कल को प्रोडक्ट इनोवेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए नेचुरली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो बीइंग ए गुड लर्नर इज ए वेरी गुड ट्रेट विच वन शुड हैव. तो इसलिए नेगेटिविटी के साथ बिल्कुल नहीं जाना. अगर कहीं गैप है भी तो वो जस्टिफाई किया जा सकता है. वन कैन ऑलवेज से सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड with grace of God and my own efforts, I have now got cleared and now I'm appearing before you in this interview. अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है तो भी कोई बात नहीं. अगर आपने कहीं और पहले बैंक में काम अपीयर किया और पास नहीं हुए, कोई बात नहीं. आज की डेट में द हाईएस्ट पोस्ट आईएएस के लिए भी लोग सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में पास होते हैं, बट अल्टीमेटली दे गेट थ्रू because they are working on it and they are working with commitment. So that element should not be there. वो apprehension सारे के सारे कैंडिडेट्स निकाल दें अपने दिमाग से. सर एक्चुअली क्या था ना, बच्चों का ये कहना था कि सर अगर हम ये बताएंगे कि हम बीएड कर रहे हैं और जस्ट देन हम LIC एडीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनका ये क्वेश्चन बन सकता है हमसे कि आप बीएड करके LIC एडीओ में कैसे, लाइक कुछ इस तरह. नहीं, there may not be any direct correlation with your educational background and ये B.Ed अगर कर रहे हो, that is one more option you want to explore for yourself. You see, there are always in a competitive environment, there are also uncertainties in spite of the fact that you focus a lot on your preparation, everything. But this is a kind of option you should have, and this is a higher, as per your academic interest, you have pursued B.Ed. So there is no harm in doing B.Ed after your this thing. I don't think it is a
This is your academic interest and you have pursued it. That's all. But definitely, because the job opportunity, everything is nowadays are becoming very limited. It is getting squeezing up gradually. So जी, naturally, you have to always, people have to have some kind of alternatives in mind, options. ओके सर। So that is not a, I don't think it is a negative, this thing, खुराना सर आप, reflection. It is not a negative reflection on it, in my view. ओके सर, खुराना सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, इसमें देखो, what is required to be emphasized is that this man is trying to be self-sufficient. He is not trying to be dependent on somebody. तो जी, इसलिए अगर वो एक प्लान बी क्रिएट कर रहा है, there is nothing wrong in it. Of course, his first choice will be to become an LIC development officer. But in the event that doesn't happen, naturally he has to have a plan B. And being a realistic in your life is the best part. It is indicating that this man is realistic and he is trying to create a plan B. In the event this doesn't happen, he has a choice of doing something else. तो ये तो एक बल्कि सेल्फ सफिशिएंसी का हाँ, एक rather you have to indicator है. make a strategic move. Strategy हाँ, होना चाहिए अपने अपने पास ना, very clear हाँ, strategies. If something हाँ. doesn't happen, then तो कल को अगर आप LIC में काम करना शुरू कर दोगे और एक एक पर्टिकुलर जिम्मेवारी वाला काम करोगे और परंतु वो एक पर्टिकुलर स्टेप आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, that doesn't mean it is the end of the day. You always you have can make a second attempt and you have to prove explore other yourself. avenues also. और क्या हो सकता है, Correct. कुछ possibilities always are So, there. so this is in fact a good indicator that this man is trying to be self-sufficient and already having a plan B. In the event this doesn't happen, he has a choice. And having a choice is not a bad thing at all. आप ग्रेजुएशन करते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, you have a choice of joining a bank or LIC or another financial institution or going to civil services. So this is a choice one has to opt for. So there's nothing wrong in having plan B, continuing your studies, etc. etc. ओके सर। सो सर हम लोग कंक्लूड करते हैं, फिर देन हम लोग आप लोगों से दो दो कमेंट लेंगे इसके ऊपर, देन कैंडिडेट को और क्या करना चाहिए और क्या प्रिपेयर करना चाहिए, हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे सर कल में। तो उससे पहले आप लोगों से दो पॉइंट आप लोगों से लेना चाहेंगे, खुराना सर एंड मोहंती सर। हाँ, मेरी तरफ से मैंने जैसे शुरू में एम्फसाइज दिया कि आपको 15 मिनट में ये प्रूव करना है कि यू आर एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए आपको पूरे का पूरा प्लान माइंड में जाके बना के जाना है, बड़े प्रिसाइज और कंसाइज आंसर देने हैं, अननेसेसरीली नहीं बोलना, गैस वर्क नहीं करना, गलत आंसर बिल्कुल नहीं देना. फिर उसके बाद आपको ऑल अलॉन्ग ये प्रूव करना है कि जो भी आपने सीखा है you will be able to make use of it in one way or another as you grow in this organization. So go with a clear mind, with a positive attitude, and your honesty and integrity should be exhibited in your words and your body language. Don't try to give any wrong answers or bluff. And आपको कुछ क्वेश्चन हॉबी का जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हॉबी का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होके जाना चाहिए. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं है तो डोंट ट्राई टू गिव anything which is not you are aware of. So इसलिए बड़े planned way में जाइए, have a positive mind and best of luck my side. ओके सर। Okay, my final message to the students who have already qualified in the year, that there is sufficient reason for you to have a kind of self-belief that you are definitely one of the, you have eliminated so many people in the competition and you are only among those chosen few. So in the interview, try to project your best, go with a very positive, open, clean mind. Okay, develop your own confidence, but only I must say that confidence comes out of preparedness. Without preparedness, your confidence level is always eroded. मैं देखा भी हूँ. तो इसीलिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके आप जाइए. Know something about life insurance corporation, what LIC is, insurance क्या होता है, what are the different insurance products in the market today, who are the competitors or peer groups in LIC today, and what is the future of LIC, what kind of life insurance, in which direction life insurance corporation is going. So have a very broad base, broad exposure to that kind of thing.
Apart from that also they might ask you something about your own individual academic background. कभी कभी कुछ लोग अगर from the same academic background होते हैं, they are prompted to pose you 1-2 questions on your own subject. उसमें थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होना चाहिए, you should not be totally blank. Okay, then the place to which you belong, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखिए, कौन सा जगह से है, क्या चल रहा है. Then you are going for a financial sector, तो keep track of the financial news. न्यूज़पेपर ओरिएंटेड तो आपको होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए. दैट अवेयरनेस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एज खन्ना साहब सेड ऑलरेडी, दैट यू हैव टू बी ए लर्नर थ्रू आउट, एंड पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू रिमेन अपडेटेड. तो कीप ट्रैक ऑफ द फाइनेंशियल न्यूज. आपको फाइनेंशियल न्यूज एंड अदर इवन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर भी कुछ पूछा जा सकता है, जस्ट टू असेस योर अवेयरनेस लेवल अबाउट द प्रेजेंट हैपनिंग्स. इसको पढ़ के जाइए and try to listen to the interviewer. Don't deviate from the purview of the question. मैं ये भी देखा हूँ, बहुत लोग क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और they go in आंसर उनका डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है. ये नहीं होना चाहिए. You only restrict yourself to the purview of the question and answer आपका बड़ा precise होना चाहिए, logical होना चाहिए, to the point होना चाहिए. I think that is always appreciated. Okay, maintain your confidence level. Your body language should be very proper, appropriate होना चाहिए. Properly dressed होके जाइए. You must look presentable. That is also a part of your non-verbal communication. And you must be look presentable. You must look like an officer. And you must वो 15 मिनट में आप अपने को इतना अच्छा तरफ से सेल करना सीखिए that you sell yourself. You sway the interview board in your favor. And my best wishes to all of you. And best wishes on behalf of ADA 247. थैंक यू सर. सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे सर यानी खुराना सर और मोहंती सर दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया सारी चीजों को. जो भी आपका जो डाउट था मेरे पास, वो हम लोग कल फिर से मिलेंगे आपके प्रिपरेशन टिप्स के साथ, खुराना सर और मोहंती सर के साथ फिर से. तो और सारी चीजों के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर. Okay, all the best to you, all the best. Thank you. Thank you and all the best. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you. और सर कैसे सब ठीक ठाक? ग्रेट. चलिए सर. थैंक यू. ओके. कल के लिए भी बताया तो नहीं उन्होंने, टाइम बताएंगे. कल मेरे को भी बताया नहीं, वो बोल रहे थे बहुत कम कैंडिडेट थे, पता नहीं वो दे वर सेइंग दैट. देखो अभी क्या, दे हैव नॉट गिवन एनी. फाइन. वो तो सो वी विल वेट फॉर देयर कम्युनिकेशन. राइट. हां ठीक है सर. थैंक यू. दोस्तों, आपको LIC एडीओ के इंटरव्यू बैच में इनरोल कराने के लिए आपको जाना है पहले adda247.com पर. कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा आपका, ठीक है. और इसी इंटरफेस में आपको दिख रहा होगा यहां पर LIC एडीओ. इसके ऊपर क्लिक करना आपने. ये आपका LIC AAO और एडीओ का इंटरव्यू बैच है, ठीक है. इसके ऊपर जाके आपने करना क्या है, आपको 5099 का अमाउंट शो कर रहा है, बट इतना नहीं, आपको बाय नाउ पर जाना है और कूपन कोड अप्लाई करना. आपको क्या, Y307 कोड आपको अप्लाई करके और इसको कर लेना है. 1379 का ये बैच होगा आपका, जिसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी. क्या क्या, तो हम आपको बता दें. यहां पर आपका डिटेल लिखा हुआ है, स्टडी प्लान आपके सामने होगा, यहां पर आप देख सकते हो. यहां पर एक क्लासेस मेरी हो चुकी हैं. राकेश सहगल सर की क्लास है, VK जैन सर की क्लास होगी, फिर मेरी होगी, फिर उदिता मैम की क्लास होगी. तो आप ये देख सकते हो आपका ये जो क्लास है, यहां पर आपको सारा कुछ अवेलेबल होगा, टाइम टू टाइम अपडेट होगा आपका, ठीक है. और तो साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दें, ठीक है. और इसमें आपका 1-on-1 मॉक इंटरव्यू भी अवेलेबल होगा. देखो 1-on-1 मॉक इंटरव्यू 5+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी होंगी, ताकि अगर आपको इंटरव्यू में यानी कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी, तो आप जब मॉक इंटरव्यू दोगे तो आपका जो पैनल है, आप क्वेश्चन को कहीं करेक्ट करके रखे रहना और वो पैनल से क्वेश्चन करना कि सर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें, ठीक है. तो वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगा यहां पर. तो दोस्तों मिलते हैं फिर से इंटरव्यू के क्लास में. तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय, टेक केयर, महादेव, राधे राधे.